Hello friends, and how are you doing today? And today's video is about new cue cards that's been asked by the examiner to the students, and students have reported out. As you know कि IELTS speaking की बहुत सारी मार्केट्स में बुक मिलती हैं, लेकिन अगर आपने कोई भी बुक बाय किया होगा तो ये दो नए क्यू कार्ड्स आपको उसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ IELTS स्पीकिंग बूस्टर, क्योंकि जैसे ही हमें ये दो नए क्यू कार्ड्स पता चले, हमने इन्हें IELTS स्पीकिंग बूस्टर में अपडेट कर दिया है। और जिन स्टूडेंट्स ने भी ये बाय कर रखी है, ऑटोमेटिकली उनके पास इसकी अपडेटेड वर्जन ओपन हो चुकी है, जिसमें ये बिल्कुल टॉप पर दो नए क्यू कार्ड्स उन्हें दिखाई देंगे। Talk about a crime you were involved in. That means कोई crime जिसमें आप शामिल थे। When it was, what crime it was, why you got involved, and how did you feel? तो इसके लिए मैंने चूज़ किया है एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा आइडिया। अगर आप ध्यान से नोटिस करें, जो हमने थोड़ा टाइम पहले आइडिया डिस्कस किया है, उसी को हम इसलिए कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पर लीगल एज के ड्राइवर नहीं हैं और फिर भी आप ड्राइव कर रहे हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है फिर भी आप ड्राइव कर रहे हैं, सो इट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस, इट इज़ ऑल्सो अ क्राइम। सो इसी चीज़ को मैं कंसिडर करूँगा इस क्यू कार्ड के आइडिया के लिए। हम बात करेंगे आपकी क्यूरियोसिटी टूवर्ड्स राइडिंग अ बाइक और अ व्हीकल। ठीक है, आप थे अपनी टीन एज में, और जैसे सभी टीनेजर्स को होता है कि उनको बाइक मिल जाए चलाने के लिए, फुल स्पीड पर वो भगाएं, लेकिन अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें नहीं अलाउ करते बिकॉज वी आर अंडर एज, क्योंकि अनटिल अनलेस 18 ईयर के आप नहीं हो जाते, आपको लीगली व्हीकल चलाना अलाउड नहीं है। सो फॉर दैट रीज़न आप हमेशा कुछ ऐसा मौका ढूंढते रहते थे कि काश आपको ये व्हीकल चलाने का मौका मिल जाए। कुछ ऐसा ही हुआ, एक दिन आपके पेरेंट्स घर पे नहीं थे, आपने सोचा कि आज मौका है, आपने अपने फ्रेंड को बुलाया, गाड़ी निकाली, बाइक निकाला, रोड पर पहुंच गए, और इसके बाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर इंटरसेक्शन पे आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ क्योंकि आपने हेलमेट नहीं पहन रखा था, तो एक पुलिस ऑफिसर ने, रादर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने आपको रोक लिया। तो अभी जब उसने रोका तो उसने आपको आपका लाइसेंस दिखाने के लिए बोला, तो एट दैट टाइम यू गॉट नम, बिल्कुल सुन पड़ गए क्योंकि आपके पास ऑफ कोर्स लाइसेंस नहीं था। एंड तो यहाँ पर उन्होंने कहा क्योंकि आपकी लीगल एज नहीं है, इट इज़ अ क्राइम टू ड्राइव और राइड विदाउट अ लाइसेंस, सो दे अरेस्टेड यू। एंड वैसे ही जैसे पिछले क्यू कार्ड में, जैसे आपके फादर को पता चला तो वहाँ पर पहुँचे पुलिस स्टेशन पर, तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी उनकी मिन्नतें की, उनको प्ली किया कि प्लीज़ मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, और उनकी रिक्वेस्ट पर वो ऑफिसर मान तो गया, लेकिन फ़ाइन था या चालान था वो उनको पे करना पड़ा, जो कि 5,000 रुपये का था। एंड यू वर रियली feeling sorry about that, and once again you felt sorry to your father. I hope ये काफ़ी रियलिस्टिक आइडिया रहेगा और आप इजीली फॉलो भी कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका सैम्पल आंसर कैसा रहेगा। Well, most of us do not have any criminal intent, yet once in a while we get involved in wrongdoing intentionally or unintentionally. Here I would like to narrate an incident when I was caught for committing a crime and was penalized for the same. I vividly remember I was almost 15 years old. Most teenagers are curious to ride motorbikes. I requested my father many times to teach me how to ride a bike, but he always refused to do so and warned me not to try until you turn 18. As it is the legal age to ride a vehicle. I always used to keep on thinking and dreaming riding a bike at full speed. One day I was home alone. I took it as an opportunity and invited one of my friends at home, and out of curiosity, we took the bike on the main road. I was driving it comfortably with my friend sitting behind, and all of a sudden, a traffic police officer stopped us at an intersection for not wearing helmet.
And when he inquired about the driving license, we got numb. The officer said it is a crime to drive without a license, and since we were underage too, he arrested us. My father arrived at the police station as soon as he got the news, and he pleaded the officer to release us. We promised the officer that it will not happen again, but my father still had to pay a fine of 5,000 rupees, which was huge. At this point, my father was very angry for not obeying him, but I apologized my father and felt sorry wholeheartedly and said, I have learned the lesson and I will not get involved in any ill activity again. And that's it. And I hope you loved the video, and this is the time for you to hit the like button and leave some comments for me. And thank you to give me constant support. Continue to watch the channel and prepare for the IELTS exam. Thanks for watching the video. Bye-bye for now. First of all, download IELTS coaching application from Google Play Store. If you are an Apple user, then download My Institute app and enter code IELTS IELTS. On home page, click on Store and choose Speaking Booster. Click in Buy Now and pay online to unlock the book for next 6 months. And that's it. You're done. Happy buying!